Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum trainees. The first lecture of this training program is from my side. I am Dr.Rakhshanda and the coordinator of this training program. And first lecture is the tapping the nutritional and economic potential of vegetables. Vegetables are recognized as essential for food and nutritional security, right? It's a promising economic opportunity for reducing rural poverty and unemployment in developing countries. It's a key component of farm diversification strategies. Most affordable source of vitamins and minerals needed for good health are contributed by vegetables. Now we have two aspects of vegetables if we grow them. One, we can tap the economic power of vegetables, and another is we can tap the nutritional power of vegetables. My topic of today is based on these two main powers of vegetables. Like, to tap the economic power of vegetables, government will need to increase their investment in farm productivity, including improved varieties, alternatives to chemical pesticides, and the use of protected cultivation. In order to tap the nutritional power of vegetable, consumers need to know how vegetables contribute to health and find them at an affordable price or be able to grow them themselves. Right? What are vegetables? First, we have to know what are vegetables. कृषि सखियाँ, आप लोगों के लिए मुझे लगता है लैंग्वेज चेंज करना चाहिए मुझे. You people are graduates, all of you, and you will be able to understand easily if I can speak in Urdu, right? Vegetables क्या हैं? They are defined as ये annuals होते हैं, perennials होते हैं, non-woody plants होते हैं, which mature, either mature or immature, succulent roots, stems, leaves, bulbs, fruits or seeds, etc. are eaten raw or cooked. या हम इनको raw भी खाते हैं, right? जैसे cucumber है, lettuce है ना, carrot है, या हम इनको cook भी करते हैं. However, the definition of vegetable centers on its use. A plant may be vegetable in one country, but a fruit or a weed or ornamental or medicinal plant in other countries, depending upon the use of the crop. अब कौन सी ऐसी vegetable है जिसको हम यहाँ medicinal भी कहते हैं और vegetable भी कहते हैं? आपकी नजर में कुछ है? हाँ? मेडिसिनल प्लांट है क्या वो? Celosia cristata. Have you ever heard of that? Celosia cristata. जिसको हम मवल बोलते हैं. मवल, आप लोगों ने सुना होगा. It's a commercial. Actually, ये commercial था, but we have altogether lost it now. When the market is full with the chemical and different colorants, we have forgot this important vegetable mawal जिसको हम बोलते हैं, है ना? We take it as a vegetable, but it has medicinal properties as well, right? Yes. Now, coming to the importance of vegetable crops. My topic, which is tapping the nutritional importance, but we have to know what is the nutritional importance in vegetables. Vegetable contribute, ये आपने 11 से पढ़ा होगा, even मुझे लगता है 9 से ही. Vegetable contain carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals and play a vital role in the balanced diet of humans. Right?
They are essential for maintaining good health. They are called as protective food. Why they are called as protective food? My students are here, but they are not interacting, unfortunately. Why are vegetables called as a protective food? When we say that vegetable contain vitamins, right? When we take vegetables, we take vitamins. If we don't take vegetables, we have certain diseases, deficiency diseases. Vitamin A, xenophthalmia, vitamin B, beriberi, vitamin C, scurvy, right? ये भी पढ़ा है आपने, है ना? So, vegetables protect us from these deficiency diseases. So, they are called as protective food. They protect us from diseases. Most of the vegetables are alkaline in nature, that neutralizes acidity caused by non-vegetarian foods. That's common today. Nowadays, when we eat meat, we feel constipation, right? We feel heaviness. So when we take vegetables along with these foods, they neutralize the acidity created by these meat and all stuff. They contain high amount of fiber. Roughages, have you ever heard of roughages? क्या होता है? When we take food, right? Roughages, when we have the vegetables, they contain roughages also. It mixes up with the food, and it helps to propel the food down the alimentary canal, and then to excrete it. It becomes easy. Whereas when we take only meat, जब हम सिर्फ मीट लेते हैं तो हम ड्राइनेस हो जाती है and we feel constipation. But when we take vegetables also, roughages add to the food and they they make the food soft and they make the food to propel down the alimentary canal and then to excrete it. Medicinal importance. Vegetable contain antioxidants, very important nowadays. Antioxidants and bioflavonoids that neutralizes the free radicals formed during the metabolism of food. This is what I was saying. जो भी हम फूड लेते हैं उससे हमारे free radicals बनते हैं बॉडी में. That results in various diseases, carcinogenic diseases. तो जो ये vegetables होते हैं, they neutralize these free radicals. इनको neutralize करते हैं ताकि उनका जो effect है वो हमारी बॉडी पे ना पड़े. Some vegetables like tomato, cucumber are a good appetizer. And the soup made from tomato can be used as a good remedy for the patient suffering from constipation. Bitter gourd and green or purple colored brinjal is good for diabetic patients. White cabbage contains vitamin U, alkas usko bolte hain, that prevents ulcer. Ash gourd is used for patients with weak nervous system. Dietary importance. Most of the vegetables are eaten raw or cooked to meet the nutritional requirement of the body. How much of vegetable is required per capita per day? 300 grams. 300 grams of vegetables, right? So initially we don't have 300 grams, we have only 280 because our production of vegetables is not that high, but now it has sufficed now. We have to take 300 grams per capita per day of vegetables. That is the dietary. Indian Council of Medical Research has given this value of 300 grams per capita per day. और ये ऐसे ही नहीं दिया गया है. This is based on the research and experiments. Most vegetables like tomato, cucumber, radish, carrot, cabbage, etc. can be used directly as a salad crop. Now coming to the economic importance of vegetables. Being a short duration crop, 3 to 4 crops can be harvested in a year from the same piece of land by effective use of land.
right? अगर हम राइस लगाते हैं, it's a staple food, तो our field becomes vacant for at least 6 to 7 months. इस बीच हम vegetables 2 बार लगा सकते हैं, because vegetables are short duration. They can give us returns after 2 months only, and we can go for rotation of another vegetable in a year. Vegetable production is a labor-intensive business and thus provides farm employment. जब आप vegetables commercially grow करते हो तो ये आपको employment भी देता है, because they are very intense. इनको बहुत मेहनत चाहिए. Vegetable production increases net income of the farmers since they are high yielder and fetch good price compared to cereals. Vegetable production stimulates semi-urban employment, especially in the field of transportation, marketing, processing and manufacture of package. जब हम वेजिटेबल की बात करते हैं, हम वेजिटेबल को प्रोड्यूस करते हैं कमर्शियली, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमको उसके लिए मार्केट जाना है, प्रोसेसिंग. जब हमारा वेजिटेबल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, टोमेटो वगैरह में ज़्यादा हो गया, क्लट हो गया, व्हाट विल वी डू? हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, देन वी गो फॉर द प्रोसेसिंग. टोमेटो प्यूरी बनाते हैं ना, छोटे छोटे यूनिट्स हैं आजकल, हमारे सीरो में 2 यूनिट्स हैं, छोटे यूनिट्स हैं. They go for the processing of this. They make the tomato puree that can be preserved for many months. है ना? Off-season vegetable production of different crops help to fetch higher prices and can boost the economy. जो चीजें हम यहाँ विंटर में नहीं लगा पाते थे, by going for off-season cultivation, we can cultivate them, and we can fetch good returns in the market. Vegetable production supports the establishment of agro-based industry. जब हमारे पास vegetable है, हमारे पास processing करना है, then we have to set up agro-based industries. Most vegetable crops are used raw material in industries like canning industries, जैसे कि canned tomatoes हैं, peas हैं, beans हैं. Pickling industry में use होता है. FoA industry make use of potato, sweet potato, jam. Alcohol and starch extraction industries uses potato, sweet potato and yam. Then what is the scope of vegetables? India has diversified altitudes variation ranging from 1000 meters to about 8000 meters. Means हमारा जो ecology है different है, different जगहों पे different है. तो we have different vegetables, tropical भी हैं, subtropical भी हैं, temperate regions भी हैं. अब specific region जो है उसके लिए हमें specific vegetables ही grow करते हैं. These provide the opportunity for the cultivation of diverse range of vegetables, right? जैसे हमारा tropical कौन-कौन सा vegetable होता है जो हम summers में लगाते हैं? टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है, कैप्सिकम. फिर हमारा temperate area है, हम winter में temperate vegetables लगाते हैं. हो गया ना चेंज, डाइवर्सिफाई हो गया कि नहीं? अब हम एक ही चीज तो नहीं लगा रहे. We use diversified products of vegetables, types of vegetables. Biogenic diversity, climatic variability जो है, due to topography, edaphic factors या rainfall है, temperature है, led to the genetic diversity of wide range of vegetables. Diversity है vegetables में. There are about thousands of species and subspecies of horticulture crops in India, including vegetables. Some of them are unexploited, commercially unutilized, localized, and underexploited vegetable crops. Do you know what are underexploited vegetable crops? हमारे students interact करो. What are underutilized vegetable crops? That are very much less attention, use नहीं, और हम under attention नहीं दिया, हमने उसको underutilized रखा. But they have a very high medicinal value. जैसे हमारा सोचल है, सूरज जिसको हम बोलते हैं, हंद है, हमारा कुछ केल की कुछ varieties हैं जो underutilized है, curly केल है. These are the underutilized vegetables. They have high, very high medicinal value.
population demands more vegetable consumption. Increased urbanization will also raise the demand for vegetable crop production. जितना हमारा population increase हो रहा है, हमारा production increase हो रहा है. पहले कुछ लोग, बहुत कम लोग vegetables के साथ करते थे. अब देखोगे ये कृषि सखियां हैं यहाँ. They are growing vegetable in their own compounds and they are selling them. Not on the commercial scale, but on the small scale. अब ये जो skill हम इनको देंगे यहाँ, maybe they can boost up their enterprise into a big one. These trainings are actually meant for those people. कि ये इनको boost करे. छोटा unit है, उसको बड़ा करें. Right? And vegetables and spices have short growth period, growing habit and plant height, which makes them fit for intercropping in perennial crops and suitable for intensive farming. तो short duration है, थोड़ी सी जगह लेती है. We can go for intercropping. Big crops के साथ small crops लगाना. Increasing the availability of a diverse range of safe vegetables. To meet the growing market demand for vegetables at affordable price, production has to increase. This can be achieved through diversification of staple crop system to include vegetables as well as intensification of existing specialized vegetable system, particularly in peri-urban areas. But ensuring the safety of vegetable supply is a critical correlate of increased its availability. हम vegetables को तब लेंगे जब हमें ये पता होगा that the vegetables are safe to use. They don't have any kind of pesticide residues and other hazardous chemicals in it. तो उसको ensure पहले करना है हमें that the vegetables are safe to eat. How can we do that? Most vegetables are highly susceptible to damage from insect, pest and plant disease in the production phase. हम क्या करते हैं? What we do then? Certain pests and diseases can cause blemishes or जो unmarketable रह जाती हैं फिर, or odd shapes as well as reduced yield. Since consumer place a high value on the appearance of fresh produce offered in the market, farm managers often turn to excessive use of pesticides. अब vegetables को good looking दिखाने के लिए, ताकि उसमें कोई दाग ना हो, what we do is we use indefinite pesticides, हाँ, जिसकी वजह से हमको risk होता है. वो अपना risk बचाते हैं actually. जो vegetable growers होते हैं, risk को बचाने के लिए वो use करते हैं, लेकिन वो risk किस पे आ जाता है? हम पे, जो उनको consume कर रहे हैं. This has to be taken care of. Otherwise, the vegetables will not be safe to eat. It's in the continuation phase. And this use of pesticide is much more intense on high value crops than on low value. क्योंकि जो उन्होंने कंट्रैक्ट फार्मिंग की होती है वो हाई वैल्यू में होती है. अब हमारे पास ओनियन का हमने लगाया, हाँ, गार्लिक है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो उनको बचाने के लिए, ताकि उनमें कोई दाग ना हो, क्योंकि हमें कमर्शियली वी हैव गॉन फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी डू इज वी यूज पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दैट. तो इसमें ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है. This practice not only increases potential health hazard and food safety concerns for consumers, but also exposes farm workers and their families to pesticide residues that can affect their own health. As a result, consumers are increasingly concerned about the safety of vegetables. If the vegetables regularly contain pathogens or exceed maximum pesticides residues limits, then consumers will associate fresh vegetables with health risk rather than health benefits and reduce the consumption. Modernization of supply chains, example refrigeration हम करते हैं या quality control system, offer a partial solution.
क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हम स्टोरेज करते हैं ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, शेल्फ लाइफ इंप्रूव हो जाए, इंक्रीज हो जाए. Studies have found that vegetables sold in the supermarkets have a lower microbial contamination than the vegetables sold in wet markets. जो सुपरमार्केट होता है वहाँ की वेजिटेबल बहुत ग्लॉसी होती है क्योंकि वो बहुत क्वालिटी कंट्रोल में बनाई गई होती है. उसकी क्वालिटी कंट्रोल की होती है, पॉली हाउसेस की होती है, ग्रीन हाउसेस की होती है. उनका रेट हाई होता है बट दे आर हेल्दी टू ईट. Regular phone-based system or internet applications are emerging as other avenues for vegetable farmers and producer groups to connect the consumers to a supply of safe, high-quality vegetables. आजकल आपको पता है, डोर टू डोर हमको वेजिटेबल्स मिलता है, ग्रोसरी मिलती है. So these groceries जो होती हैं जो हमारे घर तक पहुंचती हैं, they are directly from the field. So they are also quality product that reaches to our home doors. Food safety goals require policymakers to define suitable standards for vegetable production and handling and to put in place systems for monitoring compliance, including regular testing for pesticide residues and pathogens at major markets and public dissemination of the test results. तो आजकल food safety का बहुत ज़्यादा नो हाउ है हमारे बीच में भी और जो भी कंज्यूमर इसको लेते हैं तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट दैट रादर देन कि रेट क्या है, राइट. सो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं जो इंस्पेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम, हर एक आउटलेट पे वो टेस्ट करते हैं कि ये देखने के लिए क्या ये वेजिटेबल सेफ है फॉर कंजम्पशन, कुछ इसमें रिस्क हैजर्ड नहीं है. Now we have to increase the consciousness on fresh vegetable consumption. यहाँ recommendation dietary allowance जो है यहाँ इन्होंने ज़्यादा लिखा है but we are here concerned about only 300 grams per capita per day. इसमें 50 grams उन्होंने extra लिखा है fruit vegetables, but they can come under other vegetables also, right? जो मैंने आपको पहले कहा 300 grams, यहाँ 375 लिखा हुआ है but Indian Medical Association जो है वो 300 grams है. Such level of consciousness in increasing educational people has increased the demand of vegetable production. जब हम लोगों को ये बोलेंगे कि 300 ग्राम आपको वेजिटेबल लेना ही लेना है, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल ने दिया हुआ है ये रेट, then उनमें ये consciousness आ जाएगी that we have to take vegetables. And then when this thing comes to your mind that we have to take vegetables, then only you can produce vegetables. आजकल वैसे ट्रेंड ही है, सब बोलते हैं कि हमें वेजिटेबल खाना है बिकॉज वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ. कॉन्शियसनेस आ गई है लोगों में. Another thing is very important now. We are getting day by day conscious of the organic foods जिनमें कोई केमिकल नहीं. The production of remote area is organic in nature due to unavailability of inorganic inputs as well as farmers' poor buying capacity. जो भी कुछ एरियाज होते हैं ये हर जगह है, हमारे यहाँ भी है जहाँ फार्मर्स ग्रो करते हैं वेजिटेबल बट they can't afford high price pesticides and all that chemical fertilizers. So what they are going for traditional farming where they don't use any kind of chemicals. So it's by default those areas are organic. तो हमारे यहाँ कौन सा एरिया है जो ऑर्गेनिक है पता है? हाँ, वेजिटेबल सकी. Gurez is the area. Ladakh में आएगा हमारे एरिया में Gurez. Gurez is an area where it's organic because they don't use any kind of chemical fertilizers. Increase market development, market channel development, development of transportation, roads, irrigation channels, processing industry can be the best scope for vegetable production. Already हमने डिस्कस किया है जब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन करेंगे
तब हमें ये सारी चीजें we are going to go for all these things when we think of vegetable production on commercial scale. Fresh vegetable can be raw material for ketchups, juice, pickles, chips, packaging, drying, semi-drying food. Export. There is a huge potential to export off-season vegetables. कौन होती है off-season vegetable? इंडिया में हम ब्रोकली की वैरायटीज अगर हम ग्रो करेंगे तो उसके वहाँ के लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए ब्रोकली ऑफ सीजन है, हमारे लिए टोमेटो ऑफ सीजन है ना, वी आर ग्रोइंग इट आउट अगर हम उसको विंटर में ग्रो करेंगे। तो जो हमारे टेम्परेट वैरायटीज ऑफ ब्रोकली है या रेडिश है या कैबेज है, दो नाउअडेज क्या बहुत टाइम से वी हैव ट्रॉपिकल वैरायटीज एज वेल, बट जो टेम्परेट वैरायटीज होती है अगर हम उनको ग्रो करेंगे इन द ट्रॉपिकल एरिया वो ऑफ सीजन होता है, तो वहाँ वो नहीं होगा। जब हम उनको ग्रो करेंगे तो उनको एक्सपोर्ट करेंगे, इट्स अ मार्केट फॉर दोज वेजिटेबल्स। Most of the border cities like northern plains of India and due to climatic instability can't produce enough. Onion and spices are very popular in Nepal, Pakistan and Bangladesh. So what we do is we export these things to those places. If these are properly marketed, India can fetch huge prices. Why digitality of vegetables? अब ये नहीं है कि we have to go for only commercial production of vegetables, जैसे ये लोग कर रहे हैं घरों में. Vegetable crops can be grown in kitchen gardens, roofs of houses, terrace gardening जिसको हम बोलते हैं, verandas and windows. This not only provide fresh vegetables but can also add aesthetic value. It can also utilize waste products of home like organic residues, water, etc. These can be utilized as fresh vegetables, desserts, salads, pickles, dehydrated sauce, soups and sweets. हम छोटे लेवल पे भी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं. Private sector contributes more than 80% in the commercial seed production and distribution of vegetables. अब seed production, this is also a very big enterprise. Various promising varieties have been released by private companies that can give bumper yield on produce. जो varieties जिनका हम seed produce करेंगे, जो कुछ companies बनाती promising varieties बनाती, जिनका yield बहुत high होता है, and they can change the market. And now we have certain constraints also. Though this जो constraints हैं इसके लिए अलग से topic भी है, but क्योंकि मेरा introductory lecture है, so I can list some of the constraints for vegetable production. पहला ये economic constraint. Poor farmers cannot afford high installation and management of vegetable crops. जो इनकी problem होगी, ये ज़्यादा नहीं invest कर पाते हैं vegetables. ये एक constraint है big. High price of high seed yielding crop varieties and hybrid varieties of vegetables. अब इनके पास जो seed होगा वो traditional होगा, right? आप लोग बाजार से seed नहीं लेते होंगे, जो आपके पास है आप उसी को use करते हैं, क्योंकि जो high yielding seed होता है, hybrids का seed होता है, वो हमेशा वो high price पे होता है. अब price of जो vegetable है वो भी fluctuate होता है, कभी ज़्यादा है कभी कम. That's also a constraint. Social constraint क्या है? In rural areas, vegetables are not normally sold. They rely on their own produce. Also, some tribes don't have vegetables due to cultivation restriction. Example, onion is prohibited by Brahmins due to puja and shrada. ये यहाँ नहीं है बाहर है, but they don't prefer to grow onions. This is also a social constraint. Infrastructure constraint. Irrigation accessibility areas are even smaller in percentage that limits commercial vegetable production. पानी की कमी. That's also आपको भी होगी. जब आप vegetable लगाते होंगे, पानी की कमी होती है. ये भी एक constraint है. Varietal improvement. Varietal improvement in India isn't yet progressed. जब हम variety को improve करते हैं, कोई variety है कम yield दे रही है, हमें उसको improve करना है. ये progress ही नहीं कर रहा है. There is a lack of resistant varieties against different stress like salinity, alkalinity, disease, insect and pest. बनी है variety बहुत सारे vegetables में,
मैं कुछ में बनने भी है, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। लैक ऑफ एक्सटेंशन सपोर्ट, जब भी हम कुछ करते हैं, हम कुछ रिलीज करते हैं, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन एक्सटेंशन वर्कर्स हैव टू ब्रिंग दोज थिंग्स टू द रूरल एरियाज, टू द ऑल द फार्मर्स। वो लैक करता है, पहुंचता नहीं है आप लोगों तक। लेबर इंटेंसिव बिजनेस, ये लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें काफी लेबर लगता है। यूजुअली वी से दैट एक कनाल के लिए हमें 2 लोग चाहिए, तो उनका कंटिन्यू लेबर चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स इज वेरी लेबर, क्योंकि अगर वीड आ गया इसमें तो इट विल डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। लैक ऑफ क्रेडिट, स्मॉल एंड मॉडल फार्मर्स होते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होता है, लोन फैसिलिटी नहीं होती है। मार्केटिंग का, अब आपने कुछ चीज लगाया, लास्ट हमने एक प्रोग्राम किया इन लार गांधरबल, सो वहाँ कुछ लड़कियां थी जो वेजिटेबल ग्रो कर रही थी। जैसे कि हमने उनको कहा कि आप क्यों नहीं आगे चल रहे हो इसमें, जैसे वी डोंट हैव मार्केट। हमने कहा क्यों नहीं मार्केट, यहाँ तो आपका गांधरबल है, लेके कौन जाएगा, मार्केट बहुत दूर है। हम यहाँ ग्रो करते हैं तो अब जैसे आप लोग बोलते हो कि हम अपने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट यू डोंट गो टू द सोपोर मंडी टू, वो भी एक कॉन्स्टेंट है, बिकॉज यू लैक दोज फैसिलिटीज। सपोर्ट सिस्टम नहीं है इनको, जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। कुछ ऐसी गवर्नमेंट सब्सिडीज जो है होती हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज, मगर इन तक पहुंचती नहीं, इनको पता नहीं चलता है। अब रेमेडीज क्या हो सकती है? We have a lecture, a big lecture on this constant remedies, but since my lecture was the first introductory, I'll give just the remedies. Obtaining of high yielding varieties, right? वो सबसे है reliable source with a proper certification tags. Treating the seeds with effective fungicides and pesticides if they aren't treated before sowing and storage. वो खराब हो सकती है। The varieties resistant to disease, insect, pests, etc. are suggested by the Department of Agriculture or any other private companies should be used as far as possible. जो हम अक्सर फार्मर्स को बोलते हैं कि जो वेराइटीज हम करते हैं आपको वही उसको करो, उसको आगे चला। Planting the crops based on their suitability related by their geographical situation and climatic features. अब हमारे एरिया में जो चीज अच्छी है हम उसी को लगाएंगे, जो हमारे एरिया में वो अडेप्ट कर पाएगी, तो वही चीजें देखो। अब ये नहीं है आप यहाँ कोई ऐसा स्पाइस लगाओगे जो यहाँ एरिया में है ही नहीं। यू ग्रो टर्मरिक हियर, टर्मरिक यहाँ का क्रॉप नहीं है, इट्स अ क्रॉप ऑफ केरला, तो यहाँ का जो क्रॉप है जो अडेप्टेड है उसी को यूज करो। जो पैकेज होता है किसी भी कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स का, उसको देखो। हमारी यूनिवर्सिटी के पास पैकेज ऑफ वेजिटेबल्स है, उनकी प्रैक्टिस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे लगानी है, क्या स्पेसिंग है, क्या एरिया है, क्या सॉइल है, क्या क्लाइमेट है, सीड रेट क्या है, गो फॉर दैट। The government should implement the policies regarding agriculture graduates to be provided loan at a very lowest possible rate. मैंने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने एक बैंकर को भी इनवाइट किया है। आई होप दैट ही विल कम, जो आपको जो एग्रीकल्चर के लोन्स हैं उसके बारे में बोलेगा, सो दैट यू विल बी एबल टू नो कि आपको कहाँ कहाँ से हेल्प मिल सकती है फ्रॉम बैंक। हाँ, जो भी वेजिटेबल प्रोडक्शन एरियाज हैं that should be accessible by roads, transportation, marketing channels, etc. The land derived from irrigation should be accessible by irrigation canals. जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पानी होना चाहिए। These are some of the remedies that can be that can help the small marginal farmers and these krishi sakhis to boost their vegetable cultivation. Drainage of skilled manpower should be checked and encourage them in commercial vegetable production in the nation. जो भी skilled vegetable growers हैं उनको हमें boost करना है। Actually हमारी trainings उन्हीं के लिए है। तभी आप students को भी मैं बोलती हूँ
आप भी सीखो. This training program has a very good sessions. Good speakers will come here to speak. Right? With this, I think my topic has ended. I hope you will enjoy this program.